टेस्ट में जो मैंने 2 क्वेश्चन दिया था कार्बन कंपाउंड से 3 मार्क्स कैरिंग. State the reasons why carbon compounds have low melting and boiling points. Carbon compounds do not conduct electricity. Why? And carbon can form only covalent compound. क्यों? तो कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवैलेंट कंपाउंड, इसके बारे में था. एंड क्वेश्चन नंबर 14 था ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर इथाइन. नंबर 2 में था जा रहे क्यों खाना खा के आए थे घर से? अच्छा ठीक, फ्रूट्स तो लेकर थे कुछ. अच्छा, लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन द प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय कोवैलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड. ओके ठीक है. तो उसमें बेटा जो जो टेस्ट दोगे उन लोग यहाँ तक ही देखना, इसका आगे मत देखना, ठीक है. और जिन लोग को टेस्ट हो गया उन लोग फिर टेस्ट देके कॉपी सेंड कर दिया, उन लोग पूरा ही देख लियो. तो इसमें जैसे मार्किंग्स की भी बात होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कार्बन कंपाउंड जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. नंबर 2, कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन आयंस एंड हेंस आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड पॉइंट में carbon can form only covalent compound because carbon can neither gain or lose 4 electrons to acquire stable octet. The only way by which it can acquire the nearest noble gas configuration is by sharing its valence electron with other carbon atoms or atoms of other elements. Okay? तो नहीं तो you can write that a full thing as given in the NCERT book. So to form the C4 minus ion, it has to gain that is 4 electrons, that is 2 4 है ना, 4 electrons. Okay, and to gain 4 electrons, after gaining 4 electrons, it will be the impossible for the 6 proton to hold 10 electrons. Otherwise you can write उसके साथ ही उस तरीका it मतलब make a C4 positive ion, then 4 electrons to be removed. And to remove 4 electrons, there will be a lot of energies involved. That is also not possible. That's why it cannot form ionic bond. So to make stable configuration, it makes only covalent bond. Okay. Next is जो तुम लोग अभी जो टेस्ट दिया था बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नॉर्मली सभी ने गलत ही बना रहे. ऐसा क्यों? ठीक है ना. तो डायग्राम तुम लोग को भी बना के दिखाएंगे, और जिन लोग ऑनलाइन में टेस्ट दोगे उन लोग तो देख ही रहे हो. ठीक है बेटा, ये सारे. एंड कोवैलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड के अंदर डिफरेंस, कोवैलेंट कंपाउंड दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड आयनिक कंपाउंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. सेकेंड, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड एक्वा स्टेट. एंड आयनिक कंपाउंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड एक्वा स्टेट. ओके, लाइक दैट. अभी ये हो गया. अभी अंकिता मैं तुम्हारा कॉपी अभी चेक कर दे रहा हूँ, तो तुमने सेंड किया, इसके साथ ही इसी वीडियो के साथ ही सेंड कर देता, चेक कर देता. जैसे तुमने आंसर जो लिखा 13 में, कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. करेक्ट, यू आर गेटिंग 1 मार्क्स. नेक्स्ट वन इज कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर एब्सेंस ऑफ आयंस. ओके, करेक्ट, दैट इज यू आर गेटिंग 1 मार्क्स. Carbon can form only covalent compounds because carbon has to attain noble gas configuration. Carbon has to lose 4 electron, which requires a lot of energy. Carbon has to gain 4 electron, which is difficult. So the carbon shows 4 electrons, shares 4 electrons, and form covalent bonds and covalent compound. ठीक है, correctly you have written. तो ठीक है, to that is form the octet, to fill the octet you have written. Okay, good. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट में जो तुमने डायग्राम बना दैट इज ऑल रॉन्ग, बिकॉज हाइड्रोजन का तो डबलेट पूरा नहीं हुआ. इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं? हाइड्रोजन का तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? तो हियर यू विल नॉट गेट मार्क्स. ओके, तो नेक्स्ट इज दैट इज कोवैलेंट कंपाउंड. दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. They are generally good conductor of electricity. They have generally low melting and boiling point. They have generally high melting and boiling points. Okay, good. So you are getting 2 marks. So you are getting 5 marks out of 6, or it may be 5.5. Because electron structure तुमने आधा बनाया. ठीक है बेटा? Okay.
और एक बार बता रहा हूँ, जिन लोग टेस्ट से पहले कभी भी हम मार्किंग स्कीम एक्सप्लेनेशन भेज देता हूँ, तो तुम लोग ओनली उसके फर्स्ट पार्ट को देखिएगा। आफ्टर जो आंसर सेंड करने के बाद ही ये मार्किंग स्कीम बाकी सब चीज़ देखिएगा बेटा, है ओके। और पेरेंट्स के सामने बैठ के टेस्ट दीजिएगा और कॉपी सेंड कीजिएगा।